Hello everyone, welcome back to Hype, aka How You Got Placed Season 5. I am Arjun, and today here we have with us Shikhar Goswami sir, who has been placed in WD, and Anuj sir, who has been placed in WD and has also bagged an offer from Mercari, Japan. So first and foremost, I would love to have you both introduce yourselves in a soft manner so that our viewers get to know more about you. Sure. Sure. So, hey everyone, I'm Shikhar Goswami. I'm a fifth year student of IPG MBA batch. I've recently been placed at Western Digital, and I've also interned at Cast24 and Myelin Foundry as a machine learning intern, and at Top Leap as a business development intern. Apart from curriculum, I happen to be a part of Pralay band, which is the band of our college. And every once in a while, I like to play guitar and sing. So yeah, that's about me. Hello everyone, I am Anuj Bangard. I am into web development and I am proficient in JavaScript, React, SQL and other languages. And I have done backend intern at Factory Plus, where we were building various new features for their product. I have also done intern in government organizations like Western Central Railways. Apart from my internship experience, I am a friendly person and I love to hang out with my friends whenever I get a free time. And I also love playing Valorant. And also I am into social activities of a college and apart from college as well. So that was about me. Right, sir. So my first question is to Anu sir itself. So as you have said, you have interned in companies like Factory Plus and Western Central Railway. So please tell us more about your work experience and how come you came across such opportunities. Sure. So first of all, Factory Plus and Western Central Railways are very different sort of companies. So the first difference is one is private and other is government. So the experience that I gained in both of them were very different, and they helped me learn various new things. So talking about Factory Plus first. So when I was interviewed for Factory Plus, I get to know that it was an early stage startup. So I was excited and bit nervous at the same, because in a startup, either there is a too much work that needs to be done and it's like बहुत ऐसा रहता है कि सब कुछ आपको करना पड़ेगा. But when I started interning at Factory Plus, I got to know that they have an MVP developed and we were working on new features for them. So that was very good experience because जो हम लोग काम कर रहे थे वो ऐसा था कि पूरा एक जो फीचर है प्रोडक्ट का, उसको आप शुरू से लेके एंड तक जब तक वो प्रोडक्शन पे जा रहा है आप उस फीचर के साथ बने रहते. तो यू गेट टू नो द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ फीचर, कि हाउ इट इज़ डेवलप्ड, हाउ इट इज़ टेस्टेड एंड हाउ इट वेंट लाइव. सो ये जो एक्सपीरियंस था लर्निंग का, ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए. इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है. हाउ शुड वी राइट क्लीन कोड्स, व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म दैट वी फॉलो, एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं प्रॉपर, एंड वाई इट इज़ नीडेड एट मस्ट. And talking about Western Central Railways, so it was a whole new experience for me because it was more like a project that was given to me to develop. So I developed a complaint management system for their internal office management of complaints. So in there, I was the one, which have to do brainstorming sessions with the client, and then the solutions that they need were to be formed by me and then discuss with them, then create an MVP for them and get them approved. And so this was a process where I was involved in full development of a project. So this was a new experience, and I have learned a lot from these experience. Talking about how I bagged these opportunities, so I was very much active on LinkedIn. And the Factory Plus intern that I bagged was from an online platform which had a tie-up with startups. So I bagged it from there. And Western Central Railways was from a referral from my brother, this is how I just got these opportunities. Alright, so my next question is to Shikhar sir. Sir, you have interned at Cast24, Top Leap and Myelin Foundry. So please tell us about your work experience there and how did you prepare yourself for such kind of interviews? So coming to Cast24, I actually got this opportunity on March 2022. So basically it was 6-month internship, but I worked for 2 months and then I left this.
So I got this opportunity from LinkedIn. So actually, one of the employees of Cast24 posted it on LinkedIn. So I messaged him, told me about my work experience, where I had interned previously, and what sort of work I have. So after that, the interview got scheduled, and there were 2 rounds of interview. First round was a project discussion round, where I was interviewed about my work, the work that I done in my previous internships. Then I was asked about a little bit about technical details such as data science, statistics, probability, and questions of sort. So coming to experience, I was fortunate enough to work with intelligent minds. One of my mentors was actually very helpful throughout my internship. I got to learn very much from him. And I was actually a part of Australian tech team. So Cast24 has divisions in Australia, Dubai, and so I was part of the Australian tech team, where my project was of odometer extraction. So we had to extract from the images the odometer reading. So that was an interesting project. Later it got productionized also in the Cast24 Australia website. Coming to Myelin Foundry, I also got this opportunity from LinkedIn itself. So I messaged the CEO of the startup itself that if you have an opening, please let me know. So they were having an opening, so I interviewed for that. I was interviewed by him only. And in Myelin Foundry, my work was actually indication of fluorescent patches in mechanical parts of machines. So we had a client, a major big company, which was our client, and we did our project on that. It also got productionized later. And I developed a major part of SQL and SQLite database for that. Yes, okay, that's all. So, Anuj sir, it is evident that you have quite some experience in the field of web development. You have done numerous projects. You have secured a lot of internships as well. Can you please share your insights on being about being a web developer? Plus, what do you think are the main responsibilities of a web developer? So, first of all, what drove me to web development is what I want to share. So, when I was exploring various different fields, I have also tried basic of ML. So, I was not getting that kick. We are writing code and we are not seeing the result, basically. So that is my personal opinion. And when, I tried web development, so I was developing something in my head first, and then, I have to develop that on the code. And then I am seeing the results itself on the same, time. So that was keeping me motivated, yeah, this changes should be done. This can be modified, or this can be more smoother. So these things, motivated me to, go ahead in web development. And then I started to develop few projects as a college projects. And then, I did some freelancing as well. And due to which, that helped me in my internship as well. So talking about, the main responsibilities of a web developer. So after, having some experience in corporate, so what I feel is writing a code is a part. Definitely, the tasks that are given to you need to be eventually solved by you at the end, however you solve it. But there are few things that should be kept in mind, is like writing a clean code. So because it is very important, because when someone else or you yourself is reviewing your code, you should understand what you have written. So it will save a lot of time. And the second responsibility may be, structuring your code well, commenting properly. And then the next thing that I found helpful for me was, whenever a ticket was assigned to me, I used to first analyze the scope of that ticket, कि उसका impact किन किन areas पे पड़ेगा. तो उससे ये होता था, मेरे को ये हेल्प हो जाती थी कि अगर कोई चीज़ है जो शायद दूसरी टीम ने कवर नहीं की है, सो आई कैन से देम, दिस थिंग इज़ लेफ्ट, सो प्लीज़ थिंक ऑन दिस एरिया एज वेल. एंड उससे बाद में मेरा जो बर्डन था वो नहीं बढ़ता था. एंड आई कोड अकॉर्डिंग टू दैट, ड्यू टू विच लॉट ऑफ टाइम वॉज सेव्ड फॉर मी.
सो ये एक चीज़ होती है जो एक वेब डेवलपर को ध्यान रखना चाहिए, एंड उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये कहीं ना कहीं, कि अगर कोई उसको टिकट असाइन हुआ है एंड कोई ऊपर से वो स्कोप नहीं चेक किया तो वो एटलीस्ट स्कोप चेक करे. थर्ड थिंग इज टेस्ट योर कोड वेल, because once you test you have the confidence to pass it on, and then someone says this is wrong, then you can say no, this is the way how it should be working. So एक वो benefit मिल जाता है. And second, one more thing I would like to add is कि एज अ वेब डेवलपर आप सिर्फ अपने कोडिंग तक ही सीमित ना रहें. इफ़ यू आर एबल टू आप जहाँ पे भी इंटर्न कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, आपके अलग अलग तरीका होगा काम करने का, बट आप अगर एक बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है. जो भी टास्क आपको मिलेगा आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि ये क्यों किया जा रहा है. इफ़ यू हैव द आंसर टू वाई, देन यू विल बी एबल टू कोड फास्ट. सो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो सिर्फ अपने कोड तक सीमित रह जाते हैं कि मेरे को ये टास्क दिया है, फटाफट कोड किया उनने एंड देन या आई एम डन विथ इट. सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा उससे ऊपर अगर अपन देखेंगे, सो यू विल सी अ ब्रॉडर स्कोप of working it. So I think these are the few responsibilities that one should keep in mind while doing any sort of coding or stuff. आप personal projects भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक आगे का सोच के चलेंगे, so you will be fast. So that was it. Alright, so my next question is to Shikhar sir, and as we all know, sir, you're quite experienced in the field of machine learning. So sir, just please throw some light on this journey of yours through machine learning, and in your opinion, what is the best way to learn machine learning? My journey with machine learning is quite an interesting one actually. So I came here in first year. I had zero knowledge about coding. I didn't know about any language, C++, Python, let alone competitive coding and all the competitions that students used to give there. In our first year, ASF used to conduct these haikus where they used to teach about coding languages, competitive programming, and so. Out of peer pressure, I used to also go, but I didn't have any motive of becoming competitive programmer or getting into the field of SD. So after that, I tried a little bit about web development also. I got my hands on building projects of web development. I tried Android development also, but that didn't give me any kick as to why am I learning all these, because personally speaking, this was very depressing for me actually, to learn about web development, to learn about HTML, CSS and so after my first year, I started learning from all the courses. I initially took about the journey of learning machine learning. I initially took a course from Coursera. It is quite a famous one, of Andrew Ng. He is a famous personality in the field of AI. So everyone who starts machine learning generally does learn from that course. So after that, I started working on projects. I did deep learning projects to improve my resume and improve as a data scientist enthusiast also. So the second part of my learning was from LinkedIn itself. So there, I made good connections on LinkedIn, people who have been doing industry level work on companies. So they used to post these work that they have been doing in the company. So I read few medium blogs about what is going on in the industry. So I made similar projects around that. And apart from that, coming to the job hunt, LinkedIn was very beneficial. So same, employees from the company used to post about their openings in their team. So I used to approach them. I used to tell about my experience and get chances of interview there. So yeah, this is. Alright. So Anuj sir, you have previously worked as a freelancer. So please give our viewers more insights into this field. Plus give them more information about how can one person make more living out of being a freelancer. So मैंने जब फ्रीलांस स्टार्ट किया था तो वो कोविड का टाइम था. सब घर पे थे अपने अपने, एंड
everyone was, कुछ करते हैं. So I had my hands on freelancing. So how I started was, basically in my connection, I started posting that, I can create websites, and I was, getting referred by friends of friends. So that sort of stuff happened, and I got 1-2 initial clients, and I started with that. And when I started initially, it was going smooth. Like, I was earning money and everything was going smooth. Then, the money that I earned, I did post an ad in the newspaper. It was like a city local newspaper. So I posted an ad there. तो उसके बाद मुझे थोड़े और क्लाइंट मिले वहाँ से, एंड मैंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया था विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस. सो आई स्टार्टेड दिस वे. बट देन व्हाट हैपेंड वाज, वो एक सर्विस काइंड ऑफ एक्टिविटी बन गया था, क्योंकि ई कॉमर्स क्लाइंट थे वो. सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये फीचर भी चाहिए, वो फीचर भी चाहिए. सो ऐसे 2-3 क्लाइंट के अराउंड ही वो चीज़ें फोकस हो गई थी. ऑल मतलब पैसा मिल रहा था उस चीज़ से, बट वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी बन गई थी मेरे लिए. एंड नाउ आई वाज लाइक कि अब यहाँ से किधर जाना है. मैंने थोड़ा सा सोचा उस चीज़ पे, तो आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन लाइक मोर ऑफ लर्निंग पार्ट. जो मैंने फ्रीलांसिंग से गेन किया वो ये था. एंड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर. तो उसमें जो मेरा फोकस था वो मनी नहीं था, वो लर्निंग पे मैंने रखा, जिसके कारण मुझे जो मेरे फर्दर न्यू प्रोजेक्ट्स मिले या इंटर्न्स जो मैंने की, उसमें मुझे काफ़ी हेल्प हुई वो एक्सपीरियंस रख के. बिकॉज इन फ्रीलांसिंग यू हैव टू डील विद क्लाइंट्स, यू हैव टू कन्विंस देम. आपके पेमेंट टर्म्स एंड स्केल्स और फीचर्स जो आप दे सकते हो, जो बना सकते हो, और वो जो डिमांड कर रहे हैं उसके बीच में एक सिंक होना चाहिए. वो सारी चीज़ें आप फ्रीलांसिंग में सीखते हैं. एंड कोई अगर एज अ बिगिनर इसको स्टार्ट करना चाहेगा, तो मैं सबसे पहला सजेशन तो यही दूंगा कि वो अपना जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, वो बताए कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, यही कॉमन लिंक होती है जहाँ से आपको पहला आपका ऑर्डर मिलेगा. एंड वंस यू गेट दैट, सो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस. एंड फिर आप जैसे अपवर्क हुआ, फिवर हुआ, इन सब पे आप अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं. ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा इसमें आपको ऑर्डर मिलना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे ये चीज़ करके देते हैं. सो एट इनिशियल यू विल से लाइक कि यार 1000 रुपये मिल रहा है बस, तो मैं कैसे बना दूंगा इतने कम में. सो दिस इज़ समथिंग दैट विल टेक टाइम, बट वंस इट गेट स्टार्टेड देर इज़ नो कमिंग बैक टू इट. बट काफ़ी अनस्टेबल हो सकता है ये कभी भी. सो आपके पास अगर लाइक दैट सिक्योरिटी है कि दिमाग में कि अगर 1 महीने भी काम नहीं आया मेरे पास तो भी मेरे को चलेगा, तो आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग ये कर सकते हैं. एंड इनिशियल स्टेज पे अगर कोई करता है तो मैं यही कहूँगा कि पैसे के पीछे मत देखना, उसको एज अ लर्निंग लो. सो यू विल अर्न skills as well as money, both. So both advantages. Shikhar sir, you have previously worked as a part-time technical writer at Kids Vidya. So please share your experience in that journey and how did you come across such an opportunity? Yeah. So this was at the time when I was learning about the concepts of machine learning and data science. So I thought, why not apply what I've learned? So I started writing on Medium firstly as my own blog. So I wrote a couple of articles about what I've learned about the concepts of data science. So later on, after I uploaded 1 or 2 blogs, I was actually contacted by a person from Analytics Vidya. So he mailed me and asked whether I want to write at the technical blog of Analytics Vidya. So I thought, why not? I'll give it a try. So this was basically a freelance. This was not paid intern. This was part time. So I wrote a few articles about data science as part of Analytics Vidya blog. So yes, this was. So my next question is to Anuj sir. So we have discovered that you are part of several social service events throughout your school and college life. So what motivated you to pursue social work, and how did it make a positive impact in developing transferable skills? So to answer this, to start with, what motivated me for social work, तो सबसे पहले सोशल वर्क ही अपने आप में बहुत कुछ होता है. सिर्फ ये नहीं है कि किसी गरीब की मदद कर दी बाय मॉनिटरी टर्म्स.
बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे इमोशनल सपोर्ट हुआ बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड वेरियस अदर स्टफ. पैसे के अलावा भी वो मैं सोशल वर्क में कंसिडर करता हूँ. एंड जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा है वो मेरी फैमिली, ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो दे यूज टू से कि इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू हेल्प समवन and at any point of your life, so you know just do it, never give it a second thought. वो फिर भले ही नॉलेज के टर्म्स में हो, मॉनिटरी हो, खाना हो, या कुछ भी टर्म्स में आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, वो फ्रेंड हो या कोई जिसको आप नहीं जानते हो वो हो. तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए. एंड व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, यू नो आई जॉइंड रोड ट्रैक क्लब विच इज़ अ सोशल सर्विस क्लब एज वी ऑल नो. सो वहाँ से यू नो काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हुआ इन चीज़ों में. एंड ये छोटी छोटी खुशी होती हैं जो यू नो एट द एंड व्हेन यू रिकॉल यू रिमेंबर द स्माइल्स. एंड बजाय कि यू नो इतने पैसे खर्च हो गए थे, उतने पैसे खर्च हो गए थे. एंड यू नो लिटरली इफ़ यू सी, एक मूवी टिकट के बराबर भी आप अगर आप किसी को हेल्प करते हो, सो वो शायद मूवी से ज़्यादा आपको खुशी देगा. ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, सबके अपने अपने हो सकते हैं इस चीज़ पे. एंड जो ट्रांसफरेबल स्किल्स की बात हो रही है इसमें, सो यू नो व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ रोड ट्रैक इन फर्स्ट ईयर, आई was part of events. I go to events, but after that I was in the management side of thing. You know, managing events is also a part. So ये नहीं है कि सिर्फ आप गए एंड आपने कर दिया. अगर आपको इसको कुछ लार्ज स्केल पे करना है, सो यू नीड अ टीम टू मैनेज दिस. सो यहाँ से जो स्किल्स मैंने सीखे वो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं कि यू नो यू आर गोइंग टू अ सोशल प्लेस, एंड अगर आप वहाँ सोशलाइज ही नहीं होगे तो किस बात की. अगर आप अपने में ही लगे हैं एंड यू आर जस्ट यू नो यूजिंग योर फोन्स एंड अदर स्टफ्स जो आप रूम पे करते बजाय बस सोशल प्लेस पे जाके कर रहे हो, तो इट वोंट मेक एनी सेंस. सो आप सोशलाइज होना सीखे, मैं सोशलाइज होना सीखा पर्सनली. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप होते हैं उससे. एंड कॉन्फिडेंस जो एक बूस्ट होता है ना, वो आपको थ्रू आउट लाइफ जो है हेल्प करता है. भले ही वो जॉब हो या किसी से बात करना हो या कोई भी आपको डिसीजंस लेने हो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ में आपका अलग से स्टैंड रखती है. एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि यार ये काम मेरे को दिया है एंड दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करते हैं. सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने इस जर्नी में सीखी, यू नो वाइल आई वॉज इन रोड ट्रैक एंड वाइल डूइंग सम सोशल इवेंट्स ऑल टुगेदर. एंड एक चीज़ मैं इसमें और पुटअप करना चाहूँगा कि यू नो लाइक इफ़ यू आर कोडिंग समथिंग, आपको ऑनलाइन सोल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का. ठीक है, आपको कोई मिल जाएंगे जो आपको वो सॉल्व करके दे देंगे, आप कहीं फंसे तो. बट यू नो व्हेन देयर इज़ अ टाइम जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो शायद आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा. सो यू नीड फ्रेंड्स. सो ये भी एक टाइप का, मतलब अगर आप खुद से हट के किसी का, एक फ्रेंड का भी कोई सुन रहे हैं बात, सो वो एक इमोशनल सपोर्ट भी मैं इसी में कंसिडर करता हूँ. सो दिस इज़ द थिंग. So you both are MBA students. Can you both share some insights into the most challenging academic experiences you guys have had so far? So as we know कि हमारा integrated MBA, so we didn't get a chance to you know have a work experience prior to our MBA. So that is a you know challenging part in MBA itself कि आपके पास एक work experience नहीं है and you are studying the subjects of you know business and all marketing stuffs. तो वो आपको थियोरेटिकल लगने लगती हैं चीज़ें बजाय कि प्रैक्टिकल लगें. सो ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है कि आप प्रैक्टिकल, MBA इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल अप्लाइंग ऑफ थिंग्स. सो ये एक चैलेंजिंग पार्ट मुझे लगा मेरे एंड पे कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और हम प्रैक्टिकल चाहते हैं उस चीज़ को. एंड एक जो चीज़ चैलेंजिंग और लगी थी वो ये थी कि कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड and you know doing 2 years of MBA and still having that touch of technical so that you know I can pursue techno managerial positions. So वो touch मेरे को रखना था. So there was constant context switching between technical and you know MBA, technical and MBA. So for 2 years, so this was a challenging task that I faced personally. So challenge academically तो कुछ आया नहीं, पर एक चैलेंज वो था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वेदर टू गो इनटू टेक और वेदर टू गो इनटू मैनेजरियल पोजीशन. सो एज आई सेड एंड एज आवर जर्नी इंडिकेट्स दैट वी हैव बीन इन्वॉल्वड इन बोथ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल इंटर्नशिप्स. सो उसका एक कन्फ्यूजन हमेशा रहा है कि SD जाएँ, whether we should do data science or whether we should go to management position. So
apart from that, it's all about the perspective. Whether you want to do something, you have to develop a required skill set in that, and you have to pursue that. So that's all. So wrapping it up with one last general question to both of you. How important are soft skills and how often must one develop these kind of skills? So this is a very interesting question. So in management position, soft skill is a must. You know, in interviews you have to deliver regarding soft skill. Hard skill you can get, but you have to improve yourself. So I've seen my batchmates getting rejected because they said they were not able to understand, they were not able to explain the concepts clearly to the interview, and interview was not able to understand what they were trying to say. So hard skill तो तुम कर सकते हो पूरे 5 साल हैं, पर उस 5 साल में तुम्हें सॉफ्ट स्किल भी डेवलप करनी पड़ेंगी. हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड हाउ यू नो मेंटेन योर पर्सनल एवरीडे कॉन्वर्सेशन कैसी हो रही है तुम्हारी. सो यस. So like what Shikhar said, I would like to add like अभी जो मैंने ट्रांसफरेबल स्किल की बात की थी वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में हेल्प करता है. वैसे ही सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो आपको एनीवे रिटर्न देंगे ही देंगे. एक हार्ड स्किल होता है कि यू नो द कोडिंग, सो ऐसे 10 लोग हैं जिनको कोडिंग आती है, बट व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर वे ऑफ टॉकिंग, कि कितना याद रहेंगे लोगों को आप. वो इन सारी चीज़ों से ही बनता है. एंड एट वेरियस पॉइंट इन टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड कि यार मैंने इतना अच्छा दिया था इंटरव्यू बट मेरी बजाय उसको ले लिया. सो देर आर फ्यू फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद सॉफ्ट स्किल्स ओनली, कि यार वो वेल स्पोकन था इसलिए शायद वो ले लिया, उसको वो याद रह गया इंटरव्यूअर को, शायद इसलिए वो आगे चले गया, भले ही कोडिंग तुम दोनों ने सेम सॉल्व किया हो. सो एक कहीं तो डिफ्रेंसिएशन लाइन होती है, वो इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स के कारण होती है. दैट इज़ वॉट आई फिगर्ड आउट. हो सकता है दूसरों के लिए अलग हो ये चीज़ें. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड एज अर्ली एज यू विल डेवलप इट you will be benefited with it. And one tip that I can give to develop these skills is be an active participant in college activities, clubs, and कहीं पे भी आपको कोई भी मौका मिल रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, लो. भले ही वो आपके एक फ्रेंड सर्कल की ट्रिप प्लान करना ही क्यों ना हो, आपको उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एंड आप चीज़ें सीखेंगे जो आप ऐसे जनरली नहीं सीख सकते. आप कहीं जाके ऑनलाइन कोर्स नहीं लेंगे कि ट्रिप कैसे प्लान करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो ये सारे स्किल्स हैं जो आप ओवर टाइम प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, एंड इन दी एंड यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. Also being a part of various clubs, you get to meet a lot of people, find their new perspectives, and expand your horizons of the mind. So yes, overall it was a good journey in college, where we developed soft skills as well as hard skills to better equip us, I guess, in the future. Yeah. So thank you, Shikhar sir and Anuj sir, for sharing such great insights into your 5 years at college. And thank you all for watching today's episode of Hype. And sir, please give us the honors of. Thank you for having us and doing this interview with us. So the final takeaway of this interview is this only, that try to get yourself into a lot of activities. College is all about exploring everything. It's not about just doing coding and just focusing on academic part. So yeah, it will help you be a better person, become a better person in life and in your career as well. So yeah. So in the end, you guys did a fantastic job, and I would like to just appreciate the jobs by liking, sharing, and subscribing them.